Hello, everybody, and welcome to Ego the Skill Provider. Yesterday, we have launched something called Future Time. Day for yesterday, we have launched something called present tense. Present tense, future time. Two things I got. It's time that we have to launch something called past tense or past time. Okay. So past time is something that we are looking for. And believe me, my friends, once you know past time, you have already discussed. We have something called present tense, future time, and this is called past tense or past time. And obviously, all your misconception towards tense and time will be wiped out. I'm sure using the concept that I'm going to give you, you are able to speak English. Okay, so I'm not going to waste your time. Let's get started. I'm going to share the screen, and this is something called my timeline. Okay, I'm going to discuss something about the timeline. So what I have learned from here itself, just check it out. So past time is something called, look, this is right now, future, and something called past. Suppose let me give a time. Suppose it's 7:30 right now. Right now it's something called 7:30 p.m. Right? This is something called 7:30 p.m. And that is I'm calling it now. So this is something called now. Okay. And suppose let me take a something time at 8 p.m. Something called 8 p.m. That is something called future, obviously. And take another time 6 p.m. This is 6 p.m. Okay. This is called 6 p.m. So what you can understand, this is the exact standard. এটা হচ্ছে আমার standard. এটা আপনারা ভালো ভাবে জানেন. Let me tell you something in Oriya. So whatever happening right now, 7:30 रे jaha hochi, that is what I'm talking about right now. Effect on that is we call it present. Future, something is going to happen after some time. Attaale kon hobo, that is something called a different story altogether. What happened 6 p.m. 6টাରେ kon ଘଟିଥିଲା ସେଟା ଆମେ past କହିବା, right? So our entire focus is on past right now. So এটা timeline ବ୍ୟବହାର କଲେ and ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ କେମିତି past time ଟା express କରିବା, past tense or past time both are correct. Present tense, present time, okay. Past tense, past time, okay. But future time, present tense, already try on this. So right now our entire focus is on past time. আমি past time টা further discussion করব. How to describe past time? That's quite interesting. How to describe past time, and we are going to discuss that. So as you are aware, ଯେମିତି past tense ଟାକୁ ଆମେ ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍. Simple present, something called past, simple past, past progressive, past perfect, past perfect progressive. Just like present tense ଆମେ use କରୁଥିଲେ, past tense ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ use କରିବା. But let me tell you, ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ concept ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ. ଏବେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ଖାଇଲି, ମୁଁ ଉଠିଲି, ଛୋଡ଼ା କାମରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଆଲୋଚନା ମନରେ ରଖିବେ, you cannot speak a single word in your life. ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କୋଉଠି ରହୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହୁଛି ଆପଣ too much ଓଡିଆ, ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଓଡିଆକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି. Look, let me tell you, three things are very common to us. One is called mother, motherland, mother tongue. ଏଇଟା ଆମଠୁ କେହି ଛଡେଇକି ନେଇପାରିବେ. ଆପଣଙ୍କର ମା ଜନ୍ମଭୂମି ଆଉ ଆମ ମଦର ଟଙ୍ଗ ମାତୃଭାଷା, that very close to us. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ଟା ପଢୁଛନ୍ତି, that is you are not learning as a language or some, it's a skill. ଆପଣ କାଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ, they are trying to test your skill whether you are able to speak or not. That is a skill. ଆପଣ ଗୋଟେ ଫରେନର ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, that is a skill.
तो एठी हम स्किल हिसाब रे पढुछन यू आर ट्राइंग टू स्विम आपण स्विम करला समय आपण भाबुछन कि मो ओडिया खराब हेजो नो नथिंग लाइक दैट तो ओडिया से तो इंग्लिश रे किछि रिलेशन ना no relation at all it's a skill spoken english is a skill and you are here to learn spoken english to express yourself in आपण खाली जर्मन पढिबे you can express your in german आपण हिंदी पढुछंती you are trying to express in आपण जो माने बेंगल भाषा जानछंती बंगाली तो आपण you can also bengal रे express करछन bengal language रे so what is that it is nothing to do with our mother tongue right so let me tell you something called आपण जो आगुर जो concept रे थिले लाइक मु जाउची मु खाइची मु खाउची मु खाइली ललाली थिले हबो बबाद थिला रॉन्ग कंप्लीटली रॉन्ग ताकू मुंडो को आनंतु नाही and that's the only reason why you are not able to speak english आजी आपण माने इंग्लिश न कहबार उद्देश्य होछ बिग नेगेटिव हो से गोटा तो आपण टाइमलाइन देखो दिस इज माय टाइमलाइन वो टाइमलाइन रे मु कोन व्यवहार करू व्हाट इज द सिचुएशन that's why every day we are using something called situation based learning SBL last तीसरा क्लास में आपन कहि I have been telling the same things time and again my friends we are using a lot of about the timeline okay so this is about my past time বা past tense मो past tense अब बर्तन देखि you can check the arrow sign ए arrow sign पूर्व माने नाउ पूर्व जहा जहा घटिछि ताको हम past बोली कहबा तो past रे हम देखिबा जे simple past टा को situation हम यूज करिया right now come to the simple past this is my simple past look using SBL technique मु आपन कहितली SBL stands for situation based learning I have already informed you but let me write it for you once more that is something called situation based learning आमे को सिचुएशन रे सिंपल पास्ट रे व्यवहार करिवा बात बात दैट द फर्स्ट थिंग यू शुड नो कहीं कि ना हमर कांसेप्ट होउची इगोर बा इंग्लिश का ओडिसा रो कांसेप्ट रहउची जे आपण जे कोन सिचुएशन देखि केमति रिएक्ट करिवे दैट इज कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश आपण देखुन छोटे इंग्लिश रे गोटे छोटे वर्ड कहउची सपोज आपण माने मते बे धरन सुभाष सर हुंतु दिलीप सर हुंतु देवजानी मैडम हुंतु लॉट ऑफ पीपल आर देयर सपोज आपण मते कहल हाय सर गुड मॉर्निंग बा गुड इवनिंग मु कोन कहली आपण गुड इवनिंग कोन पई कहली मु भाबिले कि सेठी कोन कहबी मैडम एया कहले मु कोन ओडिया रे कहबी आपण भाबिले कि नो दैट गोटे फटाफट आंसर सपोज इफ विल आस्क हाउ आर यू आई एम फाइन बॉस व्हाट अबाउट यू तले आपण एटा हठात काई कहउछन रहि जाउ ना 10 मिनिट पर कहउना that is not communication communication means you have to speak instantly so if that is true आपण को सिचुएशन ए सिचुएशन में मो बर्तन सिंपल पास्ट रा यूज करी जदि आपण जानि देले यू कैन यूज इट आपण ल लाली मु जाउछि मु खाइली मु गली एछडा का ओडिया रे भाबे पे पडिबनी you have to speak आपण सिचुएशन देखिबे आंसर देबे सिचुएशन देखिबे आंसर देबे and that is called SBL टेक्निक आपण बारंबार देखुथिबे बहुत आर्ट रे आपण जतरा आसीथिले आपण आर्ट रे देखिथिबे SBL आपण कोन SBL का दिस इज कॉल्ड SBL SBL मींस गोटे सिचुएशन जानतु से सिचुएशन जेते हम सिंपल प्रेजेंट रे पढिथिले हैबिट कस्टम हॉबी यूनिवर्सल ट्रुथ रनिंग कमेंट्री एंड समथिंग कॉल्ड like साइंटिफिक फैक्टर तो सेठे आपण सिंपल प्रेजेंट व्यवहार करिवे ओवर से सिचुएशन देखला माने आपण को माइंड को सिंपल प्रेजेंट आछिया दरकार आ मु जाय मु खाय आसीवा दरकार right so simply at the time of speaking you have to speak like no what I am doing right now present progressive तो आपण मु जाउछि खाउछि करिया दरकार ने एबे से लोक करूछि just give a reply what you are doing right now Dilip sir I am writing sir काई कि ना एबे सर पचाउछु एबे कोन करूछ सुबह sir what you are writing sir I am just listening to you over एबे जहा करूछु जेंति मु आपन कहथि so these are the situation based learning the simple present टा कोड व्यवहार करिया let me the action the event or situation in the past it can be an action it can be event or it can be situation let me give an what is action I'm eating that's an action it's an action जदि मु खाइबाटा सारी देछि that is an action also past रही जाइछो event marriage हो exam हो that is an event situation sad happy they are all situation right तो action हो event हो situation हो जहा की पूर्व माने अतीत रे घटी जाय the past something happened in the past one the event is completely finished already event
completely finish ହେଇଯାଇଛି. It is already been finished in the past. ତାର କିଛି ଆଉ ସତ୍ତା ନାହିଁ. We want to mention the time or place or both of the event. ଆମେ ସମୟ ସମୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଇଭେଣ୍ଟ ଟା ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ସମୟରେ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରିବା. Right? So that time we are using simple past. Let me give an example. Okay, let me give an example. Subject plus V2, structure of a subject plus V2, go, went, gone. This is my V2, my friend. This is called V2. Okay, suppose you say I did not like the movie. Past age. You did not like the movie. What's the movie ଭଲ ଲାଗିଲାନି? I did not like the movie. Nothing. No. Past age. Mary did not go to office yesterday. Yesterday time ଲାଗିଗଲା. କହିଥିଲି. Just check it out. We have to mention the time or place. Place माने कोटा ना office time. Office को जाएंगे. Okay. John drove to London on Monday. Monday time and London है ना time. I mean a place. So drove. So what do you understand from here? Subject plus V2. प्रत्येक verb ର तीनटा form ଅଛି ମୁଁ already କହିଲି. Go, went, gone. Do, did, done. Eat, ate, eaten. Wrote, write, wrote, written. तो V2 माने ମଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, middle ରେ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, that you have to use. So it is subject plus V2. Go, went, gone. Do, did, done. Eat, ate, eaten. Write, wrote, written. Like lot of things are there. Put. Okay, play, played, played. Like that. So what is more important? Let me tell you, my friends. Like I did not like movie. It's past. Kali gote movie thila. I went to watch that movie. I did not like it. What is the problem? Okay. Mary did not go to office yesterday. Mary, my friend or who is there, he did not go to office yesterday. Where did not office yesterday? Like office is something called, or you can say, look, this is something called yesterday is time and office is the place. John drove to London. What is a London ku jauchi? This is a place and on Monday. So obviously something happened in the past. Like let me give you an example here. Something it has happened in the past and it has completed in the past. Past रे आरंभ होइछि, past रे सरी जाइछि, no effect, nothing like that. And you want to add place or time. Suppose आपण कहबी मु पुरी रे, मु आपण पचारे like Subhash sir, why did not attend class yesterday? Sir, I went to Puri yesterday. Oh, na place लगेले, आपण time भी लगेले. So remember, time and place जदि लगौछन्ति, past रे गोटे event हेछि, always use past tense, past simple. That is called past simple. Look at, let me put that things once more. We want to mention time or place or both. You want to mention time, you want to mention place, or you can use time and place, whatever it may. Right? You can say, I'm sorry, sir, I had a bad headache. Situation. I had a headache. I have a headache or I had a headache. Mo munda betha uthila, so I could not. Sir, I was down with fever. I was suffering from fever, so I could not attend the class. So what you can understand? The action is completed in the past, no relevance, it is finished right now, and you want to add time. Upon time add portion. Let me tell you once more. Time. Mujhe pachari, sir, what happens? 5 days ago I did not see you. Yes, sir, I went there. I went to Cuttack. I went to Cuttack. Cuttack ta kon? That's a place. Already. We want to mention time or place or both. Sir, I went to Cuttack 5 days ago. I went to Bhubaneswar yesterday. So Bhubaneswar is like time, sorry, place, and yesterday is like time. Suppose I'll ask you, well, I called you, like no, you did not pick up the call, sir. Something happens. No, I slept. Like that happens. So what exactly you can understand? ଯେତେବେଳେ ଆମେ simple past ଟା use କରୁଛୁ, situation ଟା କଣ ରହୁଛି? What is the situation? Situation, action, event or situation in the past. The event is completely finished. ଆଉ କିଛି ତାର ସତ୍ତା ନାହିଁ. And you want to mention time or place or both. Time टा mention करिवे, but place टा mention करिवे, and or both use करिवे. And this is my example. And what is the structure? Subject plus V2. What is V2? The gone. When is the V2? This is V3. Okay. You can say, I did not like movie. Mary did not go to office yesterday. John drove to London on Monday. Like that.
So this is all about the simple past. तो आपण जानले, let me tell you once more. आगुरु आपण कोन कहउथले ना मु गल्ली मु खाइली मु उठिली सेडा का यूज करबे, don't use like. And if you are using like that, believe me my friends, you are not able to speak a single sentence in your life. You'll be struggling speaker every time. If you want to improve, use the, this is something called 5G structure. कहि देथिले आपण. We are just going 5G. आपण जोटा आगुरु पढिथिले 2G रे अछि. So ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ lot of ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ରହିବ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଇଂଲିଶ ଟାକୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢିଛି ବଟ୍ why ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କମ ମାର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାର୍କ ସହିତ ଇଂଲିଶର କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ let me tell you it depends upon your capability to memorize a lot ଯେ ଅଧିକ memorize କରିଥିଲା ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିଲା ତା ସହିତ knowledge ର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସो ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କନସେପ୍ଟ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଭଲ ହଉନଥିଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ 30 ମାର୍କ ରଖୁଥିଲି 40 ମାର୍କ ରଖୁଥିଲି 50 ରଖୁଥିଲି it's not about mark. It's not about mark, my friend. It is about understanding the situation. Upon situation देखले English कहले. That is all about learning a language. It's a skill actually. Okay. Right now, let me go to past progressive or past continuous. Look, first try to understand what is past continuous. हमें कोटे use करिया. मु कहि छी अपन situation बुझन. Try to understand the situation. मु जाउथिली मु जाईथिली सेडा तो हसिजिबे सार आउटमको जदि आपण प्लेटफॉर्म रे जॉइन करछंती इगो प्लेटफॉर्म रे जस्ट बी ए सक्सेसफुल स्पीकर इन योर लाइफ तेणु आपण कंप्लीटली से पुराना कांसेप्ट को भूली जा दिस इज अ न्यू कांसेप्ट आई एम गोइंग टू जोटे बुझी होबनी वंस आई कैन रिप्लाई सो यू कैन आस्क मी देन एंड देयर लिसन यूजिंग SBL टेक्निक मु कहितली SBL स्टैंड फॉर सिचुएशन बेस्ड लर्निंग को सिचुएशन रे हमें पास्ट कंटीन्यूअस व्यवहार करी that is all about understanding the time tense and time it is used to express an action at a particular moment in the past आपण बुझी पर नथि let me explain गोटे particular action होच watching film मु गोटे film और टीवी देख right I am going to watch a movie or something like that अच्छा मते सार बर्तन कोन करले right now मु एबे कोन करूची मु forget about a film कथा भूली जांतो आपण पूरा मो एग्जांपल दियन वर्तमान मु कोन करूची मु आपन को सिखौची आई एम टीचिंग तो एक्शन एठे हला कोन टीचिंग एक्शन हला एठे कोन समथिंग कॉल्ड एक्शन आराम से देखो एक्शन हला टीचिंग मु वर्तमान आपन को टीचिंग दोची ओके एठे एक्शन हला टीचिंग मो कथा भाबन इट इज ऑल अबाउट टीचिंग राइट मु आपन को टीचिंग दो सेही समय रे मोर जने सांग मते कॉल करूची राइट नाउ मते कॉल करूची मु उठेलिन काले मते से फोन कर माने लाइक यू नो टुमारो ही इज गोइंग टू कॉल मी मोठे भी फोन ता मते कहे सांग मु तुमको काले फोन करथिले फोन ता उठेलानी तो केतला फोन करथिले ना मु तुमको 8 वाले फोन कर हां ताले मु सेठी कहबी जे मु केमती ताको एक्सप्रेस कर देखो बाबन जे मो 7 रे क्लास चाले 9 रे सॉरी ता भीतरे 8 टा मो सांग मते फोन कर बाबन केमती मो क्लास स्टार्ट हला 7 am PM आपण बाबू 7:30 नो 7 PM रे स्टार्ट हैला क्लास केते पर्यंत चलिबो 9 टा पर्यंत चलिबो ता भितरे गोटे मते कॉल आसीला तो सेहीटा को ही मु एक्सप्रेस करबी कोथरे ना पास्ट कंटीन्यूअस और प्रोग्रेसिव आई वाज टीचिंग आई कैन से आई वाज टीचिंग कोन पई कहबी ना लेक कामटा अतीत रे स्टार्ट हेची एंड इट वाज कंटिन्यूइंग 7टा रे स्टार्ट हेची 8टा रे 40 9टा रे बंद होबो ता भितरे एनी पॉइंट रे मते गोटे एक्सप्रेस करिवार अछि देन सपोज एट 8 PM आई कैन से आई वाज टीचिंग एट 8 PM आई वाज वाचिंग टेलीविजन सपोज आपण माने कर आनंद सर आज फर्स्ट टाइम पे जॉइन करछन सपोज सर आज जॉइन कर नथन मु काली ताको फोन करथन सर आई गिवन एक्सेस आपण कोन पे जॉइन करले सर आई वाज बिजी विथ माय बॉस और आई वाज बिजी so what exactly you understand आपण देखंतु गोटे कामटे देखंतु हमर एठी हम देखिले जे गोटे कामटे 7टा रे स्टार्ट है एक्शन एनी एक्शन माने एनी एक्शन ईटिंग स्लीपिंग गोइंग डांसिंग ड्राइविंग एनीथिंग आपण भाबंतु को ड्राइव करू आई एम ड्राइविंग राइट नाउ मु वर्तमान ड्राइव कर पास्ट कथाटा मु काली 7टा रो ड्राइविंग आरंभ कली मते भुवनेश्वर जिबार अछि राइट नाउ आई एम इन ढेंकानाल मते 2 घंटा टाइम लागो
तो 9 रे पहुंची आपण भावନ୍ତୁ 8 रे मते सुभाष सर फोन कर मु फोन उठेली तापर एटो मु पुनी फोन करि पाउथि सर मैडम सर व्हाई कैन नॉट पिक अप माय कॉल सर आई वाज ड्राइविंग कोन पई ना कामटा जो एक्शन ता स्टार्ट हेची ता पूर्वरु स्टार्ट हेची 9टा पर्यंत चलिबो ता भीतर गोटे टाइम रे मते आपण कॉल करले मो से एक्शन ता केमति कर दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट पर्टिकुलर मोमेंट 7 रु 9 भीतर जे कोनसी मोमेंट रे ता एक्सप्रेस करिया पई हमें पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव व्यवहार करू so it's quite interesting मु जाउची मु खाउथली करबेनी सर प्लीज आई एम वार्निंग इट्स अ वार्निंग साइन टू ऑल जदि आपण चाहूचो इंग्लिश कहया पई ए प्रोसेस यूज करन से प्रोसेस रे आपण इंग्लिश कहि परिबे you are not able to speak english you are following the old method the methodology has to be used like here आपण गोटे कामटे स्टार्ट करिथिले सेटा मन कर कि सम पई चालियो आपण जानि छन ता भितरे धरंतु आपण सोइथिले आपण 5 घंटा पे सोचो 2 घंटा पे सोचो आपण मनकर 7 टा रो सोई पड़ी आपण 10 टा रो उठी देखन 7 टा रे आपण सोई छंती 10 टा रे आपण उठी आपण नुवा सिनेरियो एवं सेही समय रे मु 8:30 रे आपण फोन करती आपण कोन कहबे ऑब्वियसली 7 टा रे आपण सोई थिले 10 टा रे उठिबे 8:30 रे मु कॉल करली तो आपण कोन कहबे आई वाज स्लीपिंग काई ना ता भीतर रह गेला मु बाबूजी इट्स वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी so remember this is the start point this is something called the start point and this is something called end point एटा मु लिखि दोछि this is something called the start this is called start and this is called start or begin अपन जोटा भी कोंतो and this is something called end सातटा रे आरंभ होई कि 9 रे सरुची और ता भीतर जे कोनसी गोटे टाइम रे जदि आपण एक्सप्रेस करबी से एक्शन टा यू कैन से सपोज देखो आ गोटे एग्जांपल दोछि बारंबार एग्जांपल देला आपण बुझे परंतु दिलीप सर 7टा एम रे सकाळ 7टा एम रे तांकर आज संडे अछि तो से पूरा सार फ्री अछन आज से तांकर वाशिंग करछन तांकर ड्रेस कपड़ा धोउ मु सार को 8टा रे कॉल कर आ सार करो काम चलिबो 2 घंटा तमाने 7 रु 9 पर्यंत चली मु 8 टा रे कॉल कर सर फोन उठे परिबे मु पुणी आउथरे फोन करिबि तांको अराउंड 10 o'clock सर फोन उठेबे मु कहि सर व्हाट हैपेंड यू आर नॉट पिकिंग अप माय कॉल सर आई वाज वाशिंग काहे कि नता भीतर रहियो so remember it is used to express an action at a particular moment in the past particular moment माने स्टार्ट और एंड भीतर जे कोनसी टाइम भीतर जदि आपण एक्सप्रेस करिवे सेटा को देन यू कैन से सपोज आपण कहि सर मु 7:05 रे कहिबी I was doing something. I was eating something. That time I was sleeping. I was teaching. You can say like no issue, John. So this is something called the timeline, or you can say using SBL technique. Upon data use सदाले use करिवे. One is called SBL technique, and this is timeline. देखो timeline मुंडा रे अपन रहिवा दरकार, and then only you can speak English. So what is called subject was or where V1 plus IN. I was watching television at 8 p.m. एबे कहूथि was studying history when you called me. I was studying history. Here I was studying history when you called me. I was studying history when you called me. जेतला आपण कॉल करथिले and that time I was studying. Okay. So what you can understand from here? You understood like that हमर जदी गोटे एक्शन पास्ट रे होउची मो चालुची एवं गोटे कोनसी गोटे टाइम इन बिटवीन गोटे कामटे चलिबो एनीथिंग आपण खाइबे मे बी आपण 9 टरू आरंभ करिवे 9:15 पर्यंत खाइबे तो 15 मिनिट खाइबे तो से 15 टा भीतर 9 रे स्टार्ट करले देखंतु गिव मी अनदर एग्जांपल आपण देखंतु लेट देजक मैडम 9 रे खाइबा स्टार्ट कर 9:15 पर्यंत खाउछ 9 टरू 9:15 ता खाइबा चली तो से समय तांको भाई मुक्तिकांत सर फोन करले मैडम तो उठे परिबे तापर सेठू जिबे मैडम से पछरे दीदी तुम कोन पे फोन टा उठेला बिकॉज़ आई वाज ईटिंग काहे कि ना से जो एक्शन टा हला 9 टारू 9:15 भीतर कोठी गोटे से कॉल कर से एक्शन टा अपन केन एक्सप्रेस कर यस आई वाज ईटिंग दैट्स व्हाई आई कुड नॉट पिक अप द कॉल so the time भीतर रही गला and that it was continuing that time then you can say I was eating I was playing
I was sleeping मु पचारि धरंतु आपण 2 टा रु धरंतु एटा 2 pm करंतु 2 pm रु 5 टा pm पर्यंत सोई जाइछन मु माने कर सुभाष सर मु कॉल करू सुभाष सर फोन उठौना तो मु 4 टा रे कॉल कली सर कोन कहबे कारण 2 टा रु से सोइले 5 टा रु उठिले 4 टा ता भीतर रहि गेला यू कैन से I was sleeping so this is the concept of past continuous आउ एमती यूज करंतुनी डिफरेंट मु खाउथिली मु जाउथिली पूरा फसी जिवे सर आपण इंग्लिश कहि परिबे ए प्रोसेस यूज करंतु I am sure you can speak English even fluently the way I am speaking you can speak better than me my friends किंतु इनिशियली ठीक है आपन को प्रॉब्लम हो लाइक यू नो ट्राइंग टू विजुअलाइज नॉट ये विजुअलाइज करे पे प्रॉब्लम हो but let me tell you once you just visualize these things you can easily speak okay so this is something called past continuous and past continuous past progressive subject plus was or were you are was were कोठी लागिवो was पे I पे was लागिवो I was he was she was it was they were you were plural रे were लागिवो singular रे was लागिवो एटा पॉइंट right now let me go to past perfect let me complete everything then I'll take your question since this is called past perfect देखो past perfect आला कोन मु जाईथिली मु खाईथिली ना सेटा भूल अगेन से कांसेप्ट रे जानतु आपण पूरा टाइमलाइन को देखंतु एसबीआई टेक्निक देखंतु एसबीआई टेक्निक मु आपण के आगे स्क्रीन लगे दीची आपण आराम से देखंतु कांसेप्ट चिंता करंतु एमटी यूज करू देखिबे आपण जो कोन सर इंग्लिश से आपण करे एमटी केमती होची बिकॉज़ इंग्लिश कम्स वेरी ऑटोमेटिकली आपण देखिथिबे आपण मनकर ओटे टेलर पाकु जाउछन बैंक रे जो टेलर बसछन आपण कर चेक क्लियर करछन आपण पूरा धाडी रे छिडा होछन इट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर आपण एटीएम पाकु जाउछन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपण गले 2 सेकंड रे नै केसले सो जदि आपण ए कांसेप्ट यूज करछन दिस इज कॉल्ड एटीएम दिस इज कॉल्ड एटीएम आपण फटाफट इंग्लिश कहि काई नै प्रोसेस जानिबा दरकार म कहिछि हमु किछ नुवा प्रोसेस से जानिया अछि you have to then I will tell you a very beautiful story item पढि साला परे आपन को आउट बढ़िया स्टोरी कहि ओके the past perfect this is called past in the past रो past को past perfect हुआ दे बुझे नथियो let me it is used to express an action in the past just before an action देखो माने करे एटाला past आपन जानि छथि let me give an example here let me give an example right now it's going to be 8 pm देखो आराम से वर्तमान वाला 8 pm okay 1 minute एटाला 8 pm oh it becomes 9 एटाला 8 pm okay this is called 8 pm अपन देखि परछन एटा 8 pm suppose this is 9 pm तमने फ्यूचर टाइम गेला okay एटा हम गोटे जो फर्स्ट जो एक्शन नै छी फर्स्ट माने फर्स्ट एक्शन एटा मु नौ छी अपन करो वन मोर यू नो मु अपन करो आउ गोटे नौ छी लेट मी लाइक दिस इज समथिंग कॉल्ड लाइक नो 7 pm ए जो सेकंड टाइम नै छी 6 pm हम देखो वर्तमान 8 टा छी 8 pm जोटा में नाउ we are sitting right now am आपण से बस आपण मो से this is called now not रे कोन हो that is future time that you don't know what is going to happen that comes in future ता पता भूली जा right now what action है 7 pm रे ता पर आउट एक्शन है 6 pm रे what I say it is used to express an action in the past before another action तले first action को second action short रे जोटा है ताकू past we use past perfect for the second action एठे हमें ए जो 6 pm जो एक्शन हैला से एक्शन पई हमें यूज करबा पास्ट परफेक्ट अब अपन के फर्स्ट एक्शन पई सिंपल पास्ट फर्स्ट एक्शन पई सिंपल पास्ट सेकंड एक्शन पई पास्ट परफेक्ट दैट्स ऑल मु जाईथिली मु खाईथिली नो रॉन्ग बारंबार कहूची अपन मते कहबी जे सर तले जो माने लिखि छ जेडा बोलतिला सर मु एबे भी कहूची अपन को लेट मी टेल यू गोटे समय रे आपण जानछंती सगड रे लोक जिबा कार बळद सगड गाड़ी आपण देखिथिबे बेसिकली बिलोंग्स मोस्ट ऑफ पीपल बिलोंग्स टू रूरल एरिया आपण सेही समय रे लोक जिबा आसिया करथि
एबे सर आपण प्लेन रे कहीं जाउछन से सगळे रे जाउना why because this is called in evolution तो मु सेटा भूल ठीक कहया पूर्व आपण जानिया दरकार दैट इज ए ओल्ड डेटेड आउटडेटेड प्रोसेस दैट इज आउटडेटेड आपण जस्ट कोरोना पूर्व एते कोठी आपण ऑनलाइन मीडियम थिला समस्त ऑफलाइन चल किंतु कोरोना परे ऑनलाइन हे गेला नले आपण कोठी बसता आपण ता स्थान को पाखरे ओटे पड़ता सो एवरीथिंग हैज बीन चेंज तो मु कहबा कथा होची पुराना जो प्रोसेस आपण पढिछंती दैट इज समथिंग कॉल्ड इट इज गुड फॉर रिटन कम्युनिकेशन दीप चारिपद लेखा पे ठीक अछि किंतु स्पोकन पे सेटा ठीक and whatever I am going to do right now that is going to give you a momentum to speak English fluently it's my promise to everybody so let me tell you first action 7 pm रे हिची 6 pm रे आउट एक्शन है ए सेकंड एक्शन पे मैं past perfect यूज करियो that's all let me give an example okay so this is something called subject plus heart plus beat the train had left before we arrived the train had left अच्छा आपण आगो आसिले ना आपण आगो ट्रेन छाडला ऑब्वियसली आपण ट्रेन छाड देथिबो so that's why the train had left before we arrived I was hungry because I had not taken food मु खाई नथिली बोली हंग्री हेली आगो हंग्री हेबे कि आगो खाई नथिली मु जदी खाइबिनी सर तापर हंग्री हेबी so आगो कोटा न खाइबा that's why I had not taken food I had not taken anything so I was hungry la simple past and I had not taken anything that is called past perfect so what exactly you can understand आपण एथुर कोन बुझिले what exactly you understand जे एक्चुअली एटा होची हमरो जे हमर जदी दीटा एक्शन पास्ट रहिथिबो ताले सेकंड एक्शन पई हमें केवल परफेक्ट यूज करी अच्छा आपण भी कहबे सर मु कहबी जे सपोज मु सुभाष सर को पचारली कि मानस सर को पचारली सर I went to Puri or I had gone to Puri कोटा ठीक है परंतु मु कहली कि आपण कुआडे जाइथिले काले क्लास अटेंड यू हैव नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे व्हाट हैपेंस व्हाई डिड नॉट गो देयर तो आपण कहबे जे I had gone to Puri मु पुरी जाई और सेकंड रे कहबे I went to Puri कोटा ठीक है so let me tell you जदि आपण मेंशन करिवे ना you are going आपण मेंशन करले टाइम आपण मेंशन करिवे द प्लेस यूज सिंपल past not past perfect it will be wrong I went to Puri yesterday that is correct you cannot say I had gone to Puri yesterday wrong time lagi gala boys that's why what we have written you cannot use past time like yesterday day for yesterday with past perfect to आपण time लगे परिबे नाही that is forbidden जदि आपण कहिबे लाइक यू नो I had gone to Puri yesterday क्वेश्चन माने सेंटेंस आर रॉन्ग you cannot use so past perfect can be used with only these things the second sentence eta sentence di first sentence आपण यूज करे simple past and this is called so this is all about and आपण भाबुथिबे सर ताले present perfect past perfect continuous we don't use that don't overburden your mind हमें तीनटा पास्ट रे यूज करछन we are using something called simple past मु ऑलरेडी आपन को देखाई देली this is called simple past something called past progressive and this is something called past perfect continuous हमें यूज करू नाहंती we don't use that in our day to day life so आपन एठी तीनटा सेंटेंस जानले simple रो चारटा जानले माने प्रेजेंट रो चारटा and future time enough for you to speak English. What you need right now? You need a perfect practice for yourself. Upon a perfect practice that once you know this one, then you can easily speak English.